Before we further talk about this case, see the body of that little girl. Sir. 11 years old. Your DG has come here twice probably. Affidavit. And also made to swear an affidavit. So much of insensitivity towards such kind of heinous crimes. What is this? This is the heaviest Habeas corpus. corpus where my lord directed for additional DG to remain personally present. Oh. You are Additional DG Srinivas Verma, sir. Gwalior. your additional DG. Sir, posted at Gwalior. You are in charge of Gwalior Chambal division both? No, sir. Gwalior, Shivpuri, Guna and Ashoknagar. Gwalior, Shivpuri, Guna and Ashoknagar. Guna and Ashoknagar. Yes, sir. So 4 districts. Yes, sir. How many districts are there in Gwalior and Chambal divisions? 8 districts, sir. 4 each. Yes, sir. So there are one DG, ADG Yes, sir. to look up, to take care of 4 districts only. Yes, sir. How many police stations are there in Guna? Guna has approximately. Approximately? You don't know the actual figure? Yes, sir. I exactly don't know, sir. Your SP is here. No, sir. He is not here. Sir. Now you please update yourself regarding the number of police stations at Guna. Sir. Not Guna in particular, Sir. but in each district. Sir. You have SP now, you have SSP now at district level. Sir. I think there are more officers than required to ensure proper law and order. Sir. How many police stations you have at Indore, at Gwalior? You are not aware. Exact number. Numbers you don't know. Have you ever reviewed the performance of SP and SSP in the matter of supervision over these police stations? Yes, sir. Have you done it? I've taken 2 meetings, sir, regarding the crime review. See, you are a very senior officer. Sir. Rather, you should at headquarters, being additional DG. Sir. But now you have been sent here to look after the position of IG. Sir. So your competence is beyond question, unquestionable. This much I can presume. But all said and done, the kind of investigations being undertaken by the police personals Sir. from the rank of DSP and below, it's indeed absurd. Sir. It's indeed ridiculous. Why I say so? Almost in every case, bail matters, where after recording statement of accused under section 227, the investigation stops. Sir. Neither there is any recovery. Only persons who are named in the FIR or persons who are named in the section 27 memo are being apprehended with no further investigation. Sir. How long we will go ahead with this kind of quality of police services to in the public domain? Isn't it a mockery? See, imagine, why should you not review the system, particularly in the matter of investigations? Sir. People come here for one limited relief, please direct them to register the FIRs. Sir. We have provided you all possible links so that you may update yourself. You may have coordination among different police stations. Sir. You are supposed to take the complaint on record, inquire on the allegations, call the persons who have been named in the complaint, and if you find cognizable offences, register them. Sir. Why you create such kind of poor impression in the public eyes that the police is maintaining inertia, not showing any sense of accountability towards the public at large? Sir. People are, there's a trust deficit. People are, you're losing confidence of the people. Having so many officers with no actual work of supervision, what is the use? Sir. Why are we paying crores of rupees to the police establishment for what? To face such situations. Have you seen this case? Yes, sir. No, don't give me the developments. Sir. First to see the case. Bahut sab file dena. And show that 11 years girl's dead body. See that first. Before we further talk about this case, see the body of that little girl. Sir. 11 years old. Your DG has come here twice probably Affidavit. and also made to swear an affidavit. So much of insensitivity towards such kind of heinous crimes. Photograph.
Mr. Srivastava, you help him finding out the photographs? No, not this photo, colored photo. The last day I was found. Mr. Srivastava, you helped him in finding out the photograph? No, from this record only. I want him to show the court record. Yeah, 10/4/2018 वाले में. No photocopies. हाँ नहीं वो 10 Actual photograph. I want him to see actual photographs, which is on record. If you can't find out, let me pass on the file. I'll do that. 10/4 के में मिल गए. 10/4 का नहीं. किसी के साथ होगा. पेज नंबर 7 पे. 10/4 के लिए. किसी में आता होगा. आपने बताया था मेरे को. Wow, yes, it must be a little earlier. Mr. Srivastava, you're laying your hand correctly. All right, give me the file. Don't waste my time now. Give me the file. Application for seeking the court's permission. Petitioner to cooperate with the investigation. इसके साथ में 7 नंबर पेज तक. See this girl, how badly her body is mutilated and face is smashed. Sir, very brutal. You take a picture and show it to your DG. I want you to do that. Sir, Please take a picture. Just because she happened to be a poor man's daughter, may you have constituted 2 or 3 SITs Sir. of IPS officers. May I be permitted to say something, sir? I will permit you, but what records say you have to hear me first. Sir, There were 2 or 3 SITs 3. 3. Is it? of IPS officers. Sir, And thereafter, despite there being disclosure of fact by the accused sir, that I have raped her, I have killed her, I have buried her, and you are putting a compliance report that we are still searching the girl? sir, What is this? Your DG's affidavit is mere lip service. You say we applied for narco test of that man way back in 2020 and thereafter there is no progress. How should we, if had she been a daughter of any high profile person or political executive or for that matter my daughter or your daughter, Sir. what would be the reaction? Tell me. sir, What would be the reaction? Since 2017, this writ petition is pending seeking writ of habeas corpus. sir, We are in 22 with, look at the volume of the file. What for? And there may be many more 100 such cases. Those poor persons cannot approach the court. So they have gone unheard. Emotions are crushed. But they are only lamenting because they are helpless. sir, This man could gather the courage and come here before this, through this advocate. A matter has surfaced here. We are really at pains. It's not only one case. sir, If this is the position where DG comes to the court, assures the court, and then maintain a blissful silence for years together, had that matter not come up the day on which it was called out, probably this sensitivity could not have been realized by the court also. sir, We are very disturbed Sir. with the kind of investigations going on. It's not a matter of only dereliction. It's a matter where the persons who are said to have been members of the society, in all fairness, they should be declared disqualified to hold that post despite being IPS. sir, Imagine, for a girl, 3 SITs are being established, constituted with no results. And allegations are that no sooner there was some breakthrough, the SIT was changed. This is the allegation. yes, Lord. No sooner there was some clue that real assailants could be traced, SIT was changed. You owe an explanation. Why did you means your department? I'm saying nothing against you in person. I'm only apprising you about the plight of the situation, plight of the people, Sir, and the condition of the police department who is supposed to maintain law and order, win the confidence of the people, and
and work to their satisfaction, to reach out them to help them. This is the situation. Sir. Where man will go for everything, everything people come here. Be it a matter of district administration, be it a matter of police administration, be it a matter of revenue administration. People flock to the court. Sometimes we also get overloaded because of indiscriminate litigation coming up before this court of different natures. But at the end of the day, we realize they do not come here for the sake of any enjoyment or for any recreation. They come here with some kind of with some difficulties Sir. because there is no one to hear them. Now you speak what you want to speak. Have you seen it now? Yes, sir, I've seen the Please ensure that you send these 2 photographs to your DG. I do agree they're brutal and they're very... Take a picture and send him. Yes, sir. Now you say what you want to say. Yes, sir. So, with due respect, sir, I would like to submit that this is a different case of this girl, sir, and this missing person is a different case, sir. There appears to be some confusion as to thinking that this... So you mean to say she is not his daughter? She is unidentified dead body, sir. Yes, sir. She is not his daughter? The habeas corpus who is missing is not this girl, sir. Yes, sir. She is not the same person? No, sir. फर्स्ट फोटोग्राफ तो मेरा है, जो ऊपर है वो मेरा फोटोग्राफ। The other body which is found unidentified, sir, it is not the petitioner's daughter, sir. The first photograph he says is my daughter. Not the first one, sir. The other photographs of the girl who has been brutally murdered and dismembered, these photographs are not that of his daughter, sir. No, sir. Did you say so in the court? Yes, sir. Where have you said so? Sir, I'll just give a brief facts of this case, sir, both the cases. Sir, Geeta Bai Putri Gajendra Singh Chandel, she went missing on 1/8/2017 and a report of FIR 363-366 was lodged on 9/8/2017 after 8 days in the police station, Aron, District Guna. Upon conducting lot of searches, initially the accused suspect was one Jitendra, son of Jitu Prajapati. Incidentally, this girl ran away with this boy around 15-20 days prior to this incident. Therefore, in the FIR, this Jitendra Singh, Jitu Prajapati has been named as a suspect. Now what steps have you taken against Jitu? He was arrested on 27/9/2017, sir. Then what happened? And then Then he was acquitted. there was a Yes. trial conducted and he acquitted Acquitted. for lack of evidence, yes, sir. Because Then what was the material did you collect? Pardon? What is the material you collected during the course of investigation which led to acquittal? Sir, during the course of the investigation, What did you collect? many people have been interviewed, sir, and the accused has been taken to various locations to search for the missing. Then what happened? Where But was the corpus girl? was not found, sir. When see, you have tried a person who is alleged to have taken her Sir. and married. Sir, He was put to trial. sir, Thereafter he is acquitted sir, and still girl is not traced. sir. When was he acquitted? He was acquitted on 14/2/2019, sir. Now 19, this is 22. Sir, In 3 years' time, you could not trace the girl. that's a fact, sir. But This is lot a, of this, efforts this, have been done to. this is a, what is the, where is that girl? You do not know. Sir, लॉर्ड्स ऑफ एआई परमिट, लॉर्ड्स pardon me? ऑफ एआई परमिट, ये जो चालान इन्होंने पेश किया था, देन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो एसआईटी ने, एसआईटी लास्ट सीन तक पहुंच गई थी। वो रिकॉर्ड में यहाँ है लेकिन कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं है सर। वो इंटायर डॉक्यूमेंट ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं है, जहां उन्होंने कहा कि ये लड़की यहाँ आई थी और मैंने देखा, वो रिकॉर्ड में यहाँ है लॉर्ड्स, पिटीशन के साथ में है। और वहां पेश नहीं किया गया। चालान के साथ पेश ही नहीं सर। और जबकि 178(3) में चालान पेश किया था कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो वहां ट्रायल चल ही नहीं सकती थी, और यहाँ इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट यहाँ पेश की है, और उसमें ये कहा गया है, 2-3 एविडेंस है जो आई विटनेस है, उन्होंने कहा कि ये लड़की यहाँ आई थी, हमने देखा है। वो ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं किया, और उनको एग्जामिन भी नहीं किया, पेश ही नहीं किया सर, तो कोर्ट को नॉलेज ही नहीं है, चालानी पेश नहीं किया। और सर इसके अलावा भी लॉर्ड साहब 19/2/2018 का ऑर्डर देखें, ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कंसर्न एसएचओ के अगेंस्ट एलिगेशन है, आप इनकी इंक्वायरी कीजिए। 19/2/2018 जस्टिस अग्रवाल साहब का। एक मिनट सर, जो इन्होंने इंक्वायरी की तो टीआई साहब की इंक्वायरी हुई, एसपी साहब ने टीआई साहब और दरोगा जी के बयान लेके कह दिया कि नहीं कोई केस बनते नहीं। 19/2/18 यस लॉर्ड साहब। मिस्टर रघुवंशी सर, देखिए ऑर्डर देखिए। 19(2) का ऑर्डर है, पैरा 2. Learned counsel for the petitioner on other hand submits that he has specifically mentioned in his complaint to the superintendent of police that concerned SHO had brought the OI respondent number 4 to him and had made an offer of compromising the matter, saying that the petitioner agrees to marry
his daughter with the respondent number 4, and thereafter there is no report to show what investigation has been carried out against him by SHO Police Station Aron District Guna. There is no document on record showing any interrogation against respondent 4 and 5 in this regard. There is no report of Superintendent of Police on record to show what action has been taken against the concerned SHO on the complaint of petitioner. Superintendent of Police Guna is directed to bring on record the interrogation which has been made against the concerned SHO Police Station Aron District Guna and the report of such interrogation, and under which capacity he has authorized to broker a deal between the petitioner and the private respondent vis-a-vis minor daughter of the petitioner. Let the report be filed by the Superintendent of Police Guna. Then matter was directed to be listed on 27/2. So See, 27 को भी read further order. Sir. Let the report be filed by the Superintendent of Police Guna within 7 days, and it is और सर, directed एक पैरा that the ऊपर का Superintendent पैरा of और Police देखना सर, इसके जस्ट ऊपर का पैरा देखे जो पढ़ रहे हैं. Superintendent of Police Guna is directed to bring on record the interrogation which has been made against the concerned SHO, Police Station Aron District Guna, and the report of such interrogation, and under which capacity he was authorized to broker a deal between the petitioner and the private respondent vis-a-vis minor daughter of the petitioner. That this report be filed by the Superintendent of Police Guna within 7 days, and it is directed that the Superintendent of Police District Guna shall remain personally present on the next date to answer as to if respondent number 4 was in custody for over a period of 4 months, then why no statements are on record, and when he was under the custody, what steps have been taken by the Superintendent of Police to monitor the investigation done by his subordinates in view of such serious allegations in this petition. List this case on 27/2/2018, when the Superintendent of Police Guna shall not only submit the report on the aforementioned aspect but shall remain personally present to answer the conduct of SHO Police Station Aron District Guna and his own lack of supervision in the matter of investigation. Then what happened? Then on 27/8, my lord, the matter was listed. On that date, on behalf of SP, the then SP, Mr. Nimesh Agarwal, an application for exemption from personal appearance was filed and the report was submitted. My lord may see para 2, I'll read, my lord. Learned counsel for the petitioner submits that though respondent number 4 was detained by the police authorities and he had informed that the corpus was with him 15 days back, the police authority did not effectively interrogate him regarding whereabouts of corpus and at which place he had left her. It is further submitted that the police authorities have casually dealt with the matter, allowing the respondent number 4 to go scot-free. In the circumstances, Superintendent of Police Guna is directed to file complete set of challan with the relevant papers together with detailed and comprehensive report strictly in compliance with the Order 19/2018. Personal presence of Shri such and such is dispensed with for the time being after filing of additional status report. If it is found that the same is not up to mark, then this court may be constant again to order for personal presence with additional Nothing was done. Then 19/3, my lord, the case You was come to listed. order of 16/4/18. I'll just My Lord Justice Nagu has passed the order. See that order. 16/4. I'll just, yes, ma'am. But on 16/4, the para 2, I'll read. FIR was lodged on 9/8/2017 alleging offences punishable under section 363, 366 IPC against the unknown persons bearing crime number 444 of 2017 in Police Station Aron District Guna. The respondent number 4, Jiten Singh, was arrested on 27 September 2017 and as per arrest memo next J1, his statement under section 27 of the Evidence Act was recorded on 18/1/2018, which entirely discloses that he was friends with the prosecutors, and on 1/8/2017 he had brought the prosecutor to his house, but on the next day in the morning the prosecutor informed him that she is going back home at Sirsi and therefore left the respondent number 4's residence. A statement of witnesses under section 161 CRPC were recorded
of Gajendra Singh, father of prosecutors Abhishek Gopal, Sunil, such and such, Sirvai. The assistance of print and electronic media has been taken to search the corpus. As per revelation of the State Council in the compliance report, the charge sheet has been filed against the said accused respondent number 4 Jiten Singh, but further investigation on section 173(8) CRPC was kept open against the co-accused Suresh and Neelam. Thereafter, a special investigation team was constituted of cyber cell, which according to the Learning Council for the state tried its best to search the corpus, but has not succeeded at. The State Council submits that efforts are on to do the needful. Presently, on 25th of March 2018, information was received by the police of an unidentified dead body in regards to which fresh crime number 61/2018 was registered for an offence punishable under section 302 IPC at Police Station, Khamaria, District, Jabalpur. IA number such and such has been filed by the state. This is IA, my lord, the same IA along with which the photographs have been enclosed of that girl. Has been filed by the state seeking permission of the court for directing the petitioner to cooperate the process of investigation of an identified dead body. It is mentioned in the said IA that after registration of crime, ASI of Police Station Around, District Guna, Shri Narendra Yadav went to Jabalpur along with what due to non-cooperation of petitioner in the process of identifying the dead body and denial of being subjected to DNA test, and said ASI returned to Aaron Morena. It is further informed that the dead body was kept in deep freeze for 8 days whereafter, since no claimants turned up, the dead body was buried. At this stage, Learning Council for the petitioner states that the petitioner is ready and willing to give his sample of DNA test. Let the petitioner, who claims himself to be father of the minor corpus, appear before the Deputy ASP Raghugar on 19/4/2018, who shall collect the sample in accordance with law and thereafter send the same DNA test for DNA test forensic laboratory. At the earliest, and report in this regard be submitted to this court. Let the case be taken up in the week commencing 7th of May 2000. Srivastava, your client appeared before the SSP? हाँ, वो Have हुआ। you taken the DNA First time, sample? वो मैच Yes, नहीं Lord किया sir. सर। लॉर्ड साहब हुआ क्या है, पहले तो थाने पे लेके इन्होंने डीएनए लिया, मेरा ब्लड टेस्ट लिया, तो जो लेबोरेटरी का उन्होंने मना कर दिया कि इस तरह सैंपल हम नहीं लेते। तो फिर प्रॉपर तरीके से सैंपल लिया कोर्ट की मौजूदगी में, वहां पर सैंपल हुआ और उसके बाद वो डीएनए मिसमैच हुआ। लॉर्ड साहब मैं 2 बार गया हूँ लॉर्ड साहब जबलपुर। 16/4 के ये बाद लॉर्ड साहब अर्लियर जो लॉर्ड साहब ने पढ़ा लॉर्ड साहब, उसमें भी यही आया था कि इन्होंने कंप्लीट चालान पेश नहीं किया, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कंप्लीट चालान पेश करो। वो कॉपी में देखते हैं ना अभी कहाँ क्या क्या इन्होंने वहाँ पे। हाँ, सर। जब वो पकड़ा गया है उसके बाद 4 महीने इनकी कस्टडी में रहा है, इन्होंने क्या उसका स्टेटमेंट लिया? उस समय तो किया ही नहीं इनने, केवल एक ही स्टेटमेंट 27 मेमो लिया बस, और कुछ नहीं किया सर। 4 महीने जेल में कस्टडी में रखे रहे। यस लॉर्ड साहब, सीधा जेल भेज दिया उसको, कुछ नहीं हुआ 3 दिन के बाद। क्योंकि ये जो अनदर जो इन्होंने स्टेटमेंट रिपोर्ट पेश की, मतलब स्टेटस रिपोर्ट पेश किया लास्ट में आफ्टर चालान, जब ट्रायल शुरू हो गई थी तब, तो उसमें ये बयान आए हैं लॉर्ड साहब जो चालान पेश करने के बाद कि हमने लास्ट सीन में उस लड़की को उसके घर में जाते हुए देखा, रहते हुए देखा है, और 2 लोगों के बयान हैं लॉर्ड साहब, स्टेटमेंट हैं, पर उन लोगों को ना तो कोर्ट में इन्होंने चालान पेश किया ना एग्जामाइन किया। उन दोनों जो सुरेश और वो ये राजकुमार सुरेश है लॉर्ड साहब, ये वो चालान पेश ही नहीं लॉर्ड साहब। सुरेश और ये मैं बताऊँ, एक है लॉर्ड साहब राजकुमार युधिष्ठिर सिंह रघुवंशी, जो कह रहा है कि मेरे साहब ने साथ जो सरावर आपकी पार्टी चल रही थी वहां पे ये लड़की आई थी, और दूसरा है गुलाब सिंह बाबूलाल प्रजापति। ये लॉर्ड साहब स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं 6/3/2018 को। सुरेश का पूरा नाम बताइए। ये पहले राजकुमार सन ऑफ युधिष्ठिर सिंह, राजकुमार सन ऑफ युधिष्ठिर सिंह, युधिष्ठिर। दूसरा सुरेश सन ऑफ कल्ला प्रजापति, सुरेश सन ऑफ कल्ला प्रजापति, और तीसरा लॉर्ड साहब जस्ट अ मिनट प्रजापति। हाँ, ये तीसरा है गुलाब सन ऑफ स्वर्गीय बाबूलाल प्रजापति, सन ऑफ बाबूलाल प्रजापति। जो सप्लीमेंट्री चालान पेश होना थी लॉर्ड साहब ट्रायल कोर्ट में, ये इन्वेस्टिगेशन तो इन्होंने किया है,
लेकिन करके वो थाने पर रख लिया, कहीं पेश किया नहीं, कोर्ट के सामने आए नहीं लॉर्डशिप। तो ये इनके खिलाफ इनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, Yes, Lord, किस तारीख को किया इन्होंने? बोल ये किया लॉर्डशिप 6/3/2018 को। 6/3/18 को। जरा कुछ डेट्स मुझे और दीजिए आप, जो जिस लड़के को पकड़ा था इन्होंने, यस लॉर्डशिप। क्या नाम था, जो उसके साथ वो एलिगेशन ये कि लड़की गई जितेंद्र है, को पकड़ा था। जितेंद्र है ना? Yes, Lord. एक मिनट, जितेंद्र को कब पकड़ा इन्होंने? 27/9/2017 को। और मिसिंग रिपोर्ट कब फाइल हुई है? 2/8/2017 2/8/2017। 9/8/2017 सॉरी, कोई बात नहीं। 9/8/2017। 9/8/17 को ये, और जितेंद्र पकड़े गए हैं 27/9/17 को। यस लॉर्डशिप। उसके बाद इनके पास कस्टडी कब तक रही? इनने 3 दिन 3 दिन रखे उन्होंने, भेज दिया उसको। और 3 दिन में ये कहीं लेके गए नहीं। एक मिनट, 4 महीने जेल में रहे, इनको 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला था? केवल 3 दिन का रिमांड था लॉर्डशिप। पुलिस रिमांड, 3 या 4। अच्छा। और फिर उसके बाद जो चला गया जुडिशल रिमांड में, जी। उसका बेल हुआ था? यस लॉर्डशिप। कब हुआ बेल उसका? बेल हुआ है सर। ऑर्डर नहीं है मेरा। Jitendra was arrested on 9/8 and he was granted bail on 12th of January 2018. अच्छा, ये 9/8 को अरेस्ट हुए थे ये, Yes. 9/8 को। और इसके बाद 12/1/8 को इनका बेल हो गया। यस। और ये ट्रायल कब कंप्लीट हुआ? ट्रायल कंप्लीट हुआ है सर 14/2/2019। अच्छा, इन्होंने जो ये 3 लोगों को पकड़ा, राजकुमार, सुरेश, नहीं पकड़ा नहीं सर किसी को। आई मीन इंटरोगेट किया yes, है, इंटरोगेट किया है, यस लॉर्ड। और ये किया है इन्होंने 6/3/18 को, यस लॉर्ड। है ना? ये इसके ट्रायल छूटने के के बाद, पहले, ट्रायल के पहले की बात, ट्रायल के पहले और इनके छूटने के बाद, एक्यूज के छूटने के बाद। एक्यूज के छूटने के बाद। यस इसके बाबत इन्होंने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, यस। उस पर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। नहीं किया, और ये रिकॉर्ड पे भी नहीं पेश किए, कोर्ट में भी चालान के साथ पेश नहीं किए। अगर ये एविडेंस पे आता लॉर्ड, कौन सी रिपोर्ट? ये जो उन्होंने चालान पेश किया लॉर्ड, हाँ, उस चालान में इन तीनों का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था उसको पेश नहीं किया। पेश नहीं किया। चालान 22/12/2017 को पेश हो गया। हाँ, तो उसकी चीज तो है, 22/12/17 को पेश हो गया, एंड यू हैव लेफ्ट इट ओपन। Yes. 173(8) में। Yes. Additional- Thereafter, do you dispute the fact that these persons were interrogated on 6/3/18? 3 लोग जो बता रहे हैं आप, हाँ वो हुए हैं सर इनसे। If they were interrogated, Sir. what was your further investigation on disclosure of fact that that girl was found in some function? What was the further investigation? 6/3 वाले में 6/3/18 को राजकुमार, जितेंद्र सुरेश और गुलाब, गुलाब, ये राजकुमार और गुलाब ने तो कहा ही है कि मेरे सामने आई है, हम लोग पार्टी में बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे, ये लड़की यहाँ आई थी। उसके बाद आपने उस पर क्या तहकीकात करी? Because you had left open the investigation under 173(8). That is the statement in writing before the court of law. हाँ है। तो श्रीवास्तव, ये तो वो कौन सा ऑफिसर था जिसने कहा था मैंने इनका डील कराया है, ये पैसे ये ले ऐसा जो था लॉर्ड कंसर्निंग कोतवाली का। SHO, क्या नाम था इसका? सर नाम नरेंद्र यादव। नहीं याद आपको? नहीं, आप तो अपना देखो, इनको हमसे बात कर रहे हैं, लॉर्ड साहब, आप नाम- चेक करो उसको। हाँ। नाम हाँ। लॉर्ड साहब, दो नाम सब इंस्पेक्टर नहीं- तो पनिश किए थे सर। नहीं, वो देखता हूँ क्या हुआ अभी। हाँ, क्या नाम था उसका? नाम नहीं मालूम सर। कोई बात नहीं। ये SHO ने किस तारीख को ये कहा था कि ये जो इंसिडेंट हुआ लॉर्ड साहब, हाँ। और उसके बाद एक्चुअल हुआ ये लॉर्ड साहब, मैं पुलिस की वजह से बोलना नहीं चाहता था क्योंकि पुलिस वाले अधिकारी फंसेंगे इसमें। एक्चुअल क्या लड़की देखो, थाने पे ये- आई थी सर। एक चीज बता दें आपको, रिकॉर्ड पे नहीं है ना we सर। have taken on a रिकॉर्ड very- पे नहीं है सर। we have taken on a very serious note, लॉर्ड से रिकॉर्ड पे and नहीं we है। need to reach to a logical conclusion. रिकॉर्ड पे नहीं It is a sample case before us. यस लॉर्ड। Such situations must be recurring in many more other cases. So we would not mind taking longer time, but we will reach to a logical conclusion. लॉर्ड से इन दिस केस जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, दूसरे दिन ये लड़के लड़की को थाने पे ले आए थे और मेरे से बात हुई तो मैंने एसपी साहब से जाके कंप्लेंट की कि साहब TI साहब ये कह रहे हैं कि आप लड़की की शादी इससे कर दो, वो आपके साथ नहीं जाना चाह रही। तो मैंने कहा कि मुझे मिलवा दो। ये एसपी साहब के आप नॉलेज, मतलब आपके क्लाइंट ने? मतलब पिटिशनर। हाँ। तो ये फादर लॉर्ड से इसमें क्या है कि इनका फादर मतलब जो पिटिशनर है उसका उस लड़की के अलावा इस दुनिया में कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है।
केवल इकलौती बेटी वो ही थी, इसके अलावा कोई है नहीं लॉर्ड साहब परिवार में। तो मैंने एसपी साहब से कहा भी कि साहब मेरे को ऐसे इन्होंने कहा है कि 2-4 लोग आए भी थे घर पे कि आप अपने आधार कार्ड वगैरह दे दें। ये घटना कब की है? ये लॉर्ड साहब इंसिडेंट हुआ यानी 8 तारीख को FIR हुई है, 8 तारीख को इंसिडेंट और 9 तारीख को ये अरेस्ट हुए, 10 तारीख को ये बात है लॉर्ड साहब, एक मिनट, 8 तारीख की घटना है और 10 तारीख के आसपास की बात। 8/3/17, 8 नहीं अगस्त की लॉर्ड 8/8/17। साहब, 1 अगस्त की घटना और 8 तारीख को ये 27 को ये गिरफ्तार हुए हैं। एक मिनट, 8 तारीख की घटना है, नहीं घटना 1 अगस्त की है लॉर्ड साहब। 1 अगस्त। यस, अच्छा, फिर 8/8 को क्या हुआ? 8 को FIR की, मैं गया था FIR के लिए लॉर्ड साहब, 9 को ऐड किए फिर। 9 को रजिस्टर हुई है हाँ, वो। पहले प्रयास किया कि कंप्रोमाइज हो जाए, हाँ। वो प्रयास हुआ नहीं सफल लॉर्ड साहब। हम्म, तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ लॉर्ड साहब कि ये लोग आए थे मेरे पे दबाव बनाने, हम्म, वो ट्रायल कोर्ट के इन्होंने जो दस्तावेज पेश किए हैं जहाँ एक्विटल हुआ है, उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन का स्टेटमेंट है, उसने कहा है कि कोई 3 लोग आए थे और इनके यहाँ पे दस्तावेज मांग रहे थे। वो काइंडली सी लॉर्ड साहब, दिखाइए ये है जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है लॉर्ड साहब। चालान। यस, हाँ, कंप्लायंस रिपोर्ट है लॉर्ड साहब, उसके साथ में इन्होंने पूरे स्टेटमेंट पेश किए हैं कि एक्विटल जो हुआ था हम्म। वो ये है लॉर्ड साहब, राजीव रघुवंशी का स्टेटमेंट है। ये कौन है? एक मैं देखता हूँ ये ना इंडिविजुअल एविडेंस है लॉर्ड साहब जो इन्होंने ट्रायल में पेश किए रिपोर्ट में लॉर्ड साहब। ये कोई किस IE में लगा है? ये इन्होंने रिपोर्ट पेश की है लॉर्ड साहब 1/10/2019 को, स्टेटस रिपोर्ट पेश की है लॉर्ड साहब 1/10/19। 1/10/19 को, और उस पे पेज नंबर 13 पे है लॉर्ड साहब। एक मिनट, ये कंप्लायंस रिपोर्ट है लॉर्ड साहब 1/10/19 की, कंप्लायंस रिपोर्ट डेटेड 1/10/19। 1/10/19। उस पे डॉक्यूमेंट पे तारीख डली है 29/9/2019 पर पेश हुआ है 1/10 को। आपने तो इन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट लगाई होगी तो कवरिंग भी होगा ना उसमें। देखा बाबू सर, 1/10/19 का 1/10 के पहले होगा, ये होगा, ये होगा। हाँ, ये VK सिंह कौन हुए? DG पुलिस। यस लॉर्ड, इन्होंने पेश अच्छा, किया। इनका हलफनामा है ये, हाँ, ये एफिडेविट है। पेज नंबर 13 पे देखें लॉर्ड साहब, स्टेटमेंट है इसके साथ। Let us see what he has said in this FIR, वो ये in कि- this affidavit. हाँ, उन्होंने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट से एक्यूज एक्विटल हो गया इसलिए ये फर्दर नहीं चल सकती है। इसके साथ जो पेज है पेज नंबर 13 देखें सर। 13, हाँ। यस लॉर्ड साहब, ये इंडिविजुअल विटनेस है लॉर्ड साहब, राजीव रघुवंशी सन ऑफ श्री अशोक रघुवंशी, गवर्नमेंट सर्वेंट है लॉर्ड साहब। बताएं। ये लॉर्ड साहब पहला पैरा है, गजेंद्र चंदेल मेरा पड़ोसी है, उसकी पत्नी का नाम रतनबाई है, पत्नी की मृत्यु 3-4 साल पहले हो गई है, उसकी लड़की का नाम गीताबाई है जो अपने पिता के साथ ही रहती थी। अचानक 1 अगस्त 2017 को गीताबाई घर से कहीं निकल गई, किसी के साथ चली गई। उसका पिता गजेंद्र ने काफी तलाश की लेकिन वो कोई पता नहीं चला। दिनांक 10/8/2017 लॉर्ड साहब, ये इंपॉर्टेंट है, 10/8/17 को वो और मैं रविंद्र सिंह दोपहर को अपने घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति और एक औरत मोटरसाइकिल से आए और गजेंद्र के घर पर आए और गजेंद्र को आवाज किया। जब मैंने और रविंद्र ने उसके घर गए तो महिला और गजेंद्र से गीता के आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र मांग रहे थे। वह महिला कह रही थी कि गीता की उसके भाई से जितेंद्र की शादी कराना है। वह जितेंद्र को बहन सविता है और साथ में उसका जीजा मुकेश प्रजापति आरोन का है, उसे साथ लेकर आए थे। मैंने गजेंद्र से पूछा कि गीता कहाँ है, तब उन दोनों ने बिना बताए मोटरसाइकिल से वापस चले गए कि गीता के बारे में कुछ नहीं पता। लॉर्ड साहब, ये एविडेंस है कि उस दिन ये लोग आए और यही मैंने इन पे एलिगेशन लगाया था कि ये ब्रोकिंग हो रही है कि लड़की की शादी इनसे करा दो और उसकी जांच करें, तो एसपी साहब ने जांच ही नहीं की। अच्छा, ये जो लोग हैं, ये इनका स्टेटमेंट नहीं लिया सर, जिनका पैरा 2 में है, हाँ, किसी स्टेटमेंट लिया इन्होंने? नहीं लिया सर, किसी का नहीं लिया? नहीं लिया ना, इनको इंट्रोगेट ही नहीं किया। मेरा निवेदन यही है साहब कि इसमें अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाता तो लड़की तो उसी समय बरामद हो जाती और ये एसएचओ के नॉलेज में थी। पर वो एसएचओ साहब ने फिर क्या किया, अफसर इसमें एक और बीच की है, जैसे ही वो ये केस चला एसएचओ साहब को सस्पेंड कर दिया अनदर केस में और वो ग्वालियर साइड ट्रांसफर हो गए। जब ये लास्ट जो ऑर्डर शीट लॉटरी में पड़ी है कि जो स्टेटमेंट लिया सोनू कलावत का, जैसे ये कलावत का रोल आया कि इसने मर्डर किया है, उनको वहीं पोस्टेड कर दिया लॉर्ड साहब। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया और सोनू कलावत के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। वो जैसे ही वो ये स्टेटमेंट आया कि सोनू कलावत ने कहा कि मैंने मर्डर किया, रेप किया है, तो टीआई साहब को वहीं उसी गुना में पोस्टेड कर दिया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म हुए। अब मैं ये एलिगेशन अगर पुलिस अधिकारी, क्योंकि मुझे मेरी डॉटर चाहिए थी, इसलिए मैं डायरेक्ट ये कुछ नहीं कहना चाह रहा था। अच्छा, अब आप ये देखिए मिस्टर रघुवंशी, ये सोनू कलावत का स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड हुआ?
18/11/2019 को है लोग। एक मिनट, 18 11/2019। 18/11/2019 को सोनू कुलावत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पुलिस ने किया है। यस लोग। और ये एसएचओ का नाम क्या है सर नाम नहीं मालूम मेरे को। जिसका पोस्टिंग किया था वहां पे ना? यस। तो कब किया पोस्टिंग उसका? ये सर वो ऑर्डर भी मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे इतना तो ये बताओ। नवंबर के बाद ही किया। हाँ, तो ये नवंबर के बाद वहां हुआ। Yes. कब पोस्टिंग हुई उसकी बताओ? एसएचओ कौन था वहां का? कौन सा थाना है ये? आरोन। आरोन। यस लोग। आरोन थाने में नवंबर 19 के बाद कौन वहां पोस्टेड रहा? क्योंकि जब ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ डायरेक्शन दिए कि आप डीजीपी को पर्सनल अफेयर रखें, तो उसकी पोस्टिंग यहाँ ट्रैफिक में थे, यहाँ से वापस वहीं भेज दिया गुना। लेट अस सी द पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ मिस्टर, कौन था मिस्टर राव? That is in para 5 of the affidavit filed by the then DG. तो para 5 में और para 8 में उनकी affidavit भी आया, क्यों बची गई SIT की? मैं एसआईटी की बात कर ही नहीं रहा हूँ आपसे। पैरा 5 देख लिया मैंने, उसमें जो आपने कुछ लिखा ना, किसी का ट्रांसफर हो गया, कुछ हो गया। आई विल कम टू दैट लेटर। First you show me who was the SHO of Aron police station in November 19 or thereafter. If you don't have information, take note of it. We'll fix some other date also. Just let us know regarding the person who was posted there thereafter, and now this statement which was given by Sonu Kalawat. Did you record any FIR? Registered in FIR? That forget about it. When Sonu Kalawat has made a statement before police, He was taken to the spot which was unfaced by him in his statement of section 161. वहाँ पे जब ले गए तो वहाँ जानवर का हड्डी निकला, उसको DNA को भेजा, वो जानवर का हड्डी निकला। वो छोड़ दीजिए उसको आप। सोनू कलावत खुलवाता वो जहाँ पे कैसा लग रहा है इसको देखने पे, तो पुलिस के डर की वजह से उसने ये तो बता दिया कि मैंने मारा है, मैंने बलात्कार किया, फिर मारा। पर उसको जब वहाँ पे ले गए जहाँ पे उसने बताया वो कुछ नहीं है, वो वहाँ पे जो भी हुआ होगा, वो आपने किसी भी जानवर का स्केलेटन को आपने इकट्ठा किया। Anyway, we are not impressed with that part of it. We want to know, after recording of statement of Sonu Kulawat on 18/11/19, what further you have done? come to the affidavit of Mr. T.S. Baghel, the additional SP, which No. I don't want any affidavits. I want that case diary. Did you register any complaint or not? two running. नहीं किया आपने। That's a serious lapse. And there is no FIR registered. There is no investigation done in 2019. There is FIR and the matter is pending under section 173. There was no need for the registration of second FIR. Mr. Counsel, then all right, you can update me on technicality and educate me also. But all said and done, what supplementary challan have you put up? Did you put up a supplementary challan? नहीं किया। Did you record the statement of these persons who have been named in the court by the witness, नहीं किया वो। which shows that there are few more individuals? But the IO was, no, this IO will be useless. Was he there in 19? Why don't you, have you got the complete case diary or not? You take down the dates. I am giving you the, you chronologically explain. Number 1, the date of missing girl. 2, FIR, the report, date of the report, the investigation conducted in relation to missing person, challan filed before the court, details thereof. Then the statement, in the challan, the statements of persons who were examined in the court. डॉक्टर आफ्टर चालान जो इन्वेस्टिगेशन किया वो तो कहीं पेश ही नहीं है। After filing of challan, complete report regarding investigation, if any, including the statement of witnesses recorded during investigation. The steps taken after recording of statement of Sonu Kalawat. Next, verification of posting of the SHO who was initially involved in the case, and later on after recording of statement of Sonu Kalawat in November 19 at Around. Question is whether the same person who was associated with, who was SHO of Around at the time of the missing girl, thereafter transferred to Gwalior traffic and again sent back to Around as SHO,
Is it a fact or not? And what step have you taken regarding the further investigation after Sonu Kulawat has been examined, statement is recorded? Now, what steps have you taken for narco test of Sonu Kulawat after filing of an application seeking permission of the collector in 2020? This is what your DGP says. Have you seen that order sheet? Yes. Matter. See, GMF, 2020 को you have moved an application before the collector. So what have you done? Rejected, then we filed a revision petition that has been rejected on 30th of June 2022. No, but the collector gave you permission which year? And now another thing, you write down how your subsequent compliance report is filed to search out the girl after disclosure of this fact of Sonu Kulawat that he has raped and murdered the girl. See, once that statement has come in your record, you are submitting a compliance report in the High Court that we are still searching the girl without further investigating the matter in the context of the statement of Sonu Kulawat. And you are taking us for a ride. Sir, we are taking all steps. We are following all the latest SOP, which is issued by the police headquarters. This is what your DG says. And he is unmindful of the fact that on the one hand, one of the accused persons who is not even apprehended discloses the fact of rape and murder. You ignore that statement and you proceed to file a alleged complaint report in the court, so-called rather I should say, in the court, that said we are searching the girl. डॉक्टर अगर ये हॉनरेबल कोर्ट का आदेश मानते तो हॉनरेबल यादव साहब ने भी डायरेक्शन दिया था कि ये बाइनर है, इसमें पॉस्को भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसमें ऑर्डर है लोग केस में, तो बाद भी इसमें रजिस्टर्ड नहीं करते ये लोग, ये ना हॉनरेबल Since 17 everything is going in ipsy dixie manner. हॉनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कुछ नहीं हुआ लॉर्ड इसमें। वो ऑर्डर भी दिखाइए. We have to write everything in the order sheet. जस्टिस संजय यादव साहब का है लॉर्ड, ये लॉर्ड 20/3/2018 का ऑर्डर है। Have you seen the order sheet of 20th March? Why have you not done it? Is there any big person involved behind all this? Tell you why have you not done it? The statement of that Sonu Kulawat was reported. No. I'm not going for Sonu Kulawat. I'm going slight previous situation. After this. No, I want name of those persons who consider SIT also. I want name of those persons. Para 5 only talks of ABC. I do not know the name. I will name them also. You please, Mr. Counsel, please hear me. After 20th March 18, did you examine the matter whether there should be also further addition of charges under POCSO Act? Have you read down? After 20th March 18 order, did you examine the case? And what prevented you from further adding those sections of POCSO Act? Now, you are talking about the SITs which your DG has said in his paragraph 5. 5 I have seen. Now, let us see. The Mr. Srivastava, लॉर्ड इन्होंने हाँ ये जो ये स्टेटस रिपोर्ट पेश करी है 19/1/21 को 19/1 19/1/21 देखा आपने उसको 15/1 लिखा है सोनू कलावत की स्टेट के बाद इन्होंने कितनी रिपोर्ट्स पेश करी हैं? ये 2 रिपोर्ट पेश की है लॉर्ड उसके बाद एक 19/21 की है, एक तो 27 फरवरी 2000 नहीं सॉरी ये 15/1 की है मेरे पास लॉर्ड कॉपी केवल, एक है 22/7/21 की है क्या? 3 की है सर, मैं बता रहा हूँ। एक की है सर मेरा बीच में वो 5/3/2020 को 5/3/2020 को इसको जो कोविड से डायरेक्ट सबमिट की पीरियोडिकल रिपोर्ट एंड स्टेटस रिपोर्ट वो सब तो ठीक है। आपने एक रिपोर्ट जो लगाई है ये है एक 15/1/2021 की है, 22/7/2021 21/12/21 की है, 19/1/21 की है, फिर आपने लगाई है ये 26/7/21 की है, 22/7 26/7
22/7 बस वो लास्ट है क्या? ये 3 तो यहाँ मुझे दिख रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन से आपके, वो जो आपने डीजी ने जो एफिडेविट दिया था, डीजी का, वीके सिंह है ना? हाँ DG ये के कौन- डीजी साहब का जो था सर वो 9 सितंबर 2019 में दिया। ये दिया 29/9/2019 का है। सितंबर It was in compliance of the order of passed by the honorable court. ये आपके डायरेक्टर जनरल ने कितने एफिडेविट्स पेश किए हैं? 2? 2 किए, एक 10 को इसके बाद किया सर, 1/10 को किया, इसी के जस्ट बाद है। 26/10 को का है, ये भोपाल का है। 18/10 को, I'm sorry सर, 18/10 का तारीख डला उसमें, नहीं, उसमें लास्ट में 26/10 लिखा है। 26/10 को। 26/10 का है ना? उसके पहले एक और किया है शायद, ये तो बघेल है कोई। 29/9 को, 29/9/2019 को पहला है। जस्ट यस, ये आपका है 29/9 का है ये जी। आपका। ये 29/9 के एफिडेविट में पैरा आपने पैरा 5 में कहा है, पैरा 5 और 8 में पढ़े देता हूँ। हमने 3 SIT बनाई थी। जी सर, हम जरा उन ऑफिसर्स के नाम जानना चाहते हैं। वो इसमें सर लगाए हमने, बी, सी और डी का इनेक्सल लगाए। आपने लगाया नहीं उसको। BCD जो है, हाँ, ये बी है सर, इसके पेज ये 17 अनुराग पांडे, 27 पे, 27, 28, 29 पेज पे है। हाँ, ये आपने अनुराग पांडे हैं कोई, जी सर, एसडीओपी। ये SDOP है। ये सबसे पहले एसडीओपी की बनाई सर, जो एसपी गुना ने बनाई आईजी साहब के कहने पे। 1 मिनट, इसमें कोई IPS ऑफिसर भी है कि नहीं है? नहीं है इसमें, कोई फिर नहीं। जब इन्होंने सही से अच्छा, नहीं किया, कोई बात then the नहीं, कोई second- बात नहीं। अब आप मुझे इन तीनों SITs की जी सर, सेपरेट कंपाइल्ड रिपोर्ट दीजिए। ठीक, प्लीज टेक अ नोट। अलग अलग कर। I want the report of SIT of 3 SITs constituted by annexure B, C and D, अलग अलग क्या क्या किया। and let us see what have they done with reference to the affidavit filed by the DG, जी because the DG has detailed regarding some steps being taken by these SITs. जी सर, Let us see what steps they have taken, because you have not produced any of the SIT reports in the High Court. You have not produced any of the SIT reports in the High Court, except the affidavits or so-called compliance reports. ये लोग तो 26/10/2019 की जो कंप्लायंस रिपोर्ट है, उस 26/10/2019 की जो कंप्लायंस रिपोर्ट है, ये है वो जो विपिन कुमार जो क्या बोलते हैं TI का ना, अगर आप एक 10 कितना, ये भाई साहब 26/10/19 वो ABCD ना। हाँ वो दोषी हो गया, अब बताइए। तो पेज नहीं है। Prima facie valid, it appears that those SIT reports are not on record. Are not on record. I have noted down, मतलब। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड से जो कंसर्निंग SHO उसका नाम बता रहा था, हाँ, वो है 26/10/2019 की रिपोर्ट है ना, 26/10/19। हाँ, उसमें लॉर्ड साहब ये पेज नंबर 15 पे दिया है, अभय प्रताप सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी आरोन, 26/7/19। 26/10/2019। 26/10 ये 31/10 को पेश किए लॉर्ड साहब, 21/10 को 31। 31/10। यस लॉर्ड साहब, ये उसमें डली है 26/10 भोपाल से, और ये डेट है 31/10 को। इनको रॉ साहब को बताइए नाम। ये हाँ, 26/7 है, 10 तो नहीं दिख रही हमको। 26/10 है लॉर्ड साहब, और डेट पेश है, उसमें पेश किए है 31/10 को इन लोगों ने। ये सेकंड वाला जो है 28/10 है, नहीं 26/10, सेकंड एफिडेविट जो डीजीपी का है। सेकेंड एफिडेविट ऑफ DGP। हाँ, सिलेक्ट किया था। इसमें डॉक्टर पेज नंबर 15 पे जो है, उसमें उनका नाम दिया हुआ है। हाँ, ये अक्टूबर 19 में चले गए वहाँ हाँ, पर। ये पहले भी हट गए थे, इसके बाद 19 में फिर वहां पहुंच गए, फिर 19 में फिर हटे। ये मतलब इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है जी सर।
18/11/19 को, यस लॉर्ड। है ना? और ये वहां कब पहुंच गए? उसके स्टेटमेंट के बाद पहुंचे होंगे ये, जी। है ना? तो इस ऑर्डर से इनको हटाया है, इस अक्टूबर के ऑर्डर से इनको हटाया वहां से दोबारा से, कहाँ से हटाया? ये आरोन से। और फिर सर इसके बाद का ऑर्डर नहीं है। आप बोल रहे थे ना कि ये एक्चुअली इनिशियल घटना 2017 की थी, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ इन्हें यहाँ सस्पेंड करके हटा दिया। बाद में जब यहाँ कोर्ट से ऑर्डर हुआ डीजीएमपी के लिए कि आप यहाँ कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करें, तो इनको वही पोस्ट कर दिया। वो पोस्टिंग ऑर्डर किस तारीख वो को? ऑर्डर नहीं है। ये जो ऑर्डर है जो आप थोड़ा तो मैं पढ़ता हूँ, इसमें क्या हुआ, उसको सब इंस्पेक्टर को इसलिए रखा एसएचओ को क्योंकि उसको पहले का ज्ञान था, वो पहले पैरे में था। ज्यादा ही ज्ञान था ये उसको। ये मैं कहना मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, चूंकि घटना एवं यही उक्त है। अपराध इसी बात था, एक मिनट। उक्त अपराध की कायमी के समय निरीक्षक अभय प्रताप सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ होकर उनके द्वारा प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना की गई। चूंकि निरीक्षक अभय प्रताप सिंह को उक्त प्रकरण की पूर्व से जानकारी है, अतः निरीक्षक को सच यातायात प्रभारी के पद से हटाया जाके जाकर वही भेजा है। वही कर दिया। ये आप बताओ मेरे को कि जब ये सोनू कलावत स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, 18/11 को हुआ है। हाँ, तो इसने जानकारी मिलने के बाद क्या किया इसने फिर? इसने नहीं, इसके भाई बाद- जिसको- इसमें भाई तो ऐसा- एसआईटी हो गई सर, और एसआईटी बघेल साहब के अंडर में कंस्टिट्यूट हुई। जो भी हो, जी। ये आदमी को जस्टिफाई किया आपने ट्रांसफर करके वापस आरोन में आगे पहले कि की उसको उसका- पहले था, उसके बाद तो रहा ना नवंबर 19 के बाद। हाँ, ये रहा है तो ऐसा लग रहा है। हाँ, तो नवंबर 19 के बाद क्या किया नवंबर उसने? 19 को ऐसा लग रहा है सर कि इसी के टाइम पे वो रिकॉर्ड हुआ उसका स्टेटमेंट। उसके बाद क्या हुआ? आई मीन वी आर मोर कंसर्न विद क्या किया उसने? दैट आई हैव नोटेड। विल क्या नाम है इस ऑफिसर का? ये है दोस्तों अभय प्रताप सिंह। नहीं, और कुछ है, आशीष। यही है अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह, निरीक्षक अभय प्रताप सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी आरोन के और पद से- देखो आजकल कहाँ पे है वो? वही वो भी पता चला। ने देव शायद वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आड़े वहां पहुंच गए हो, किसी वो क्या होता है वो आरटीओ के साथ लग गए हो। भाई प्राइस पोस्टिंग मिलनी चाहिए ना ऐसे लोगों को। कटर हाँ, कटर होता है। ये और सर ये जो इनकी पोस्टिंग की गई आफ्टर पनिशमेंट की गई, इनको पनिश कर अरे दिया इस भाई केस में। दे आर डेकोरेटेड ऑफिसर्स। प्रताप सिंह अच्छा। भाई दे डांस टू द ट्यून ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब आपने देखा नहीं कल टीवी में क्या आ रहा, परसों टीवी में आ रहा था ना कुछ, हाँ, अजमेर वाला देखा था सर, अजमेर वाला देखा नहीं वो? कल देखा था। हम भी टीवी देख के बोल रहे हैं आपसे। हाँ, टीआई साहब कह रहे थे कि ये बोल दो। बिल्कुल वही है सर। देखा राव साहब आपने क्या स्थिति बन रही है? थोड़ा सा बोलिए आप इन लोगों को। ये तो एक सैंपल है हाई कोर्ट के सामने। ऐसे ऐसे कितने केसेस आपके यहाँ होंगे जो यहाँ पहुंच नहीं पाते। उनकी प्लाइट सोचो। You have more officers than constables, it appears. And officers cannot go beyond certain limits. They will say, no, I am the SP. I am SSP. I am not supposed to go to police station. Why should I go? My job is to ensure that if some minister comes, if chief minister comes, I am available to him. Protocol or take his instructions to ensure that persons are not uncomfortable named by them. Punctuality is so apparent when the political executives are here, anywhere. But what about visiting the police stations? What about ensuring what these additional SPs, SHOs, head constables, sub-inspectors, what are they doing? There has to be review of investigation, a review of the functioning of the police stations. When will you give me all these details? 2 weeks by that time we will be finishing the election. No, election is most important thing in India. But for election, the functioning of India is always imperiled. Law and order. So my lord, if my lord may grant that 7 days time, please do, because we will have to call the in charge of the SIT and all that, and See, now elections are round the year. by elections. So this is a very pious incident in India that throughout year there is an election. Celebration. You call it celebration, whatever you call it, but unfortunate part is it is at the cost of the public and public funds.
Taxpayers' money which are invested. Most important thing in India is holding of elections. Rest of the things will always take a back seat or would be lower in preference. Election is always at center stage, no matter what happens across country. 10 days will be available all the documents. I will not write detailed order today. I have given you all the points on which I need your explanations, and be careful. Don't try to put something more than what was there. Please don't do that. If there is a lapse, we are here to see that there is no recurrence of such situations. But we have to write something about the lapses, if any, only for the purpose so that the police force is revamped and you are not criticized in public domain. That is the purpose of calling you here. We have deliberately not called you DG. Otherwise, we would have called him also. But I thought it is always better to first talk to you because you are the immediate boss over these SSPs and SPs in this zone. Please take stock of situation and ensure that they overcome this hangover that they are IPS officers, therefore they are supposed to sit in air-conditioned offices only. Please tell them to go to the field, take stock of the situations, meet those poor villagers who suffer with a fear psychosis, unable to reach to police stations because of the fear of the SHO. Please, I request you. Sir, as long as I'm in this post, I promise that my best efforts will be done, sir. I assure you, Honorable Court, that we will do. I want it to be in system. You being the head of the Chambal and Gwalior division or Gwalior division, please also tell your counterpart. I will, sir. Please do it. Otherwise, once the people get agitated and things are beyond their, if you test their patience and it goes beyond that, it will be very difficult to control the mob. And you have seen the instances where police personnel were also given beating by the public at large. There are instances in India. I don't want such things to happen in Madhya Pradesh. Because there is a limit to contain yourself, the public at large. But we must see that you rise to the occasion and ensure that the trust and faith reposed on you is not betrayed. Yes, sir. Okay, Shri Srivastava for the petitioner, Shri Raghuvanshi with additional AG for the state. Shri, may I know your initials? Sir, I'm Srinivas Verma, sir. Shri Srinivas Rao. No? Verma. DC. I'm sorry, I address you as Rao. I'm sorry for Sir, generally South India, everybody is Rao, sir. that. Shri Verma, IG Police. Stop. During the course of the arguments, certain crucial facts and informations since have not been found on record but have direct bearing on the controversy involved in the instant writ of habeas corpus. Therefore, the hearing of the case is deferred on a next date at the request of Shri Raghuvanshi, enabling him to collect the informations and documents in the aforesaid context. Stop. 10 days time as prayed for is granted. List this case for further orders. Today is 7th or 8th? 8th. We'll call it on 20th. 20th July. Mr. Verma, you may have to come again. 20th. Shri Verma shall remain present on the next date. सर एक और प्रेयर है। हाँ। यहाँ से जैसे ही कोई ऑर्डर होता है हमें वहाँ बिठा दिया जाता थाने में, तो इतना निवेदन है सर आप इतना मुझे बता भर दीजिएगा आप बस नेक्स्ट पेशी में कि साहब हमको 10 मिनट में बैठा लिया गया, लॉर्ड्स इतना बता भर दीजिएगा आप मुझे, देन यू सी व्हाट माय रिएक्शन एंड द कंसीक्वेंसेस फ्रॉम देयर फ्रॉम. Just let me have a feel. Yes. Even during this period, if anybody disturbs you or invades your privacy, you can send a message to my principal registrar. So this is what has happened. लॉर्ड्स Rest assured that man will not be spared. Howsoever big he is not above the rule of law. Anybody. ओब्लाइस Just let me know. ओब्लाइस